Hi everyone, welcome to the session. So guys, in this session we are actually going to discuss about the important quant concepts that form the 70% of IPMAT questions, right? From where do we expect the majority of the questions and how should we prepare this section? उसके बारे में ये session होने वाला है, right? So let's start first. What where focus matter actually? See, IPMAT Quant, it contains 40 questions, right? Approximately 40 questions we have with us. Now, the level of the questions are moderate to high when it comes to IPMAT. The level of questions you will be finding somewhere between moderate to high. Now, the biggest constraint is that the time per question, right? I have approximately even less than 2 minutes of a time to spare on a question, right? And you know that the 70% of the paper it comes from the 5 core areas, right? तो यहाँ पर हमारा गोल रहेगा टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वांट सिलेबस, राइट? कि वो 70% पार्ट कहाँ पर है, ठीक है? विच पार्ट इज दैट एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट, वो पूरा अपने को यहाँ पे समझना है, ठीक है? तो बेसिकली वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट बाय डूइंग दिस 70%, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, they make up the 70% of the questions. उसी को will be discussing in detail. तो सबसे पहले if I give you a structure of the exam, ठीक है, number of questions पे अगर हम बात करें तो you will see that arithmetic is the portion where you can expect 30 to 35% of the syllabus ये रहता है and 12 to 14 questions are there. ठीक है, a major chunk आप कह सकते हो कि is coming from the arithmetic. ठीक है, the weightage is somewhere between 30 to 35. Then comes to algebra. Algebra is somewhere 15 to 20% of the questions. मतलब 6 to 8 questions you can expect coming out of the algebra section, right? Then number system again 4 to 6 questions, geometry, mensuration and modern maths. So these topics they cover like 70% of your whole syllabus when it comes to the IPMAT quant. तो क्वांट में गाइस सी द माई, अब आपका जो प्रायोरिटाइजेशन है या जो प्रिपरेशन का वे रहेगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा टारगेट रहेगा कि फोकस ऑन द एरिथमेटिक सेक्शन. ठीक है, इफ यू गाइस आर वीक एट अरिथमेटिक तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अरिथमेटिक, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, लर्न द कॉन्सेप्ट्स, बिल्ड स्पीड. क्योंकि विदाउट एरिथमेटिक, सी इफ यू डू एरिथमेटिक वेल, आप लगभग 35% सिलेबस यहाँ से बनने वाला है. 12 to 14 questions are, I cannot let go, right? तो प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी इन दिस ऑर्डर कि अब जो भी प्रिपरेशन करना है, द टारगेट शुड बी अरिथमेटिक फर्स्ट, then parallelly algebra, then number system, फिर geometry, mensuration and modern maths, they have comparatively lesser weightage. तो accordingly my preparation should be there. तो अब अगर वन बाय वन हम इनको समझते हैं, लाइक इन अरिथमेटिक, तो पहला जो हमारा कोर एरिया रहेगा मैरिथमेटिक. Why we are so interested in arithmetic first कि 30 to 35% of the weightage is there. अब यहाँ पे जो की टॉपिक्स आपके रहेंगे, परसेंटेजेस, राइट? परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, दे आर रिलेटेड चैप्टर. यानी परसेंटेज पे अगर आप काम कर लोगे तो यू विल बी गुड एट प्रॉफिट एंड लॉस, यू विल बी गुड एट सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज ये दोनों चैप्टर आर जस्ट एप्लीकेशन. ठीक है, देन यू हैव रेशियोज, एवरेजेस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. These topics include arithmetic, and from these topic guys there will be like 30 to 35% of the questions, right? तो it is very important because यहाँ पे जो questions होते हैं generally they are like a real life based scenario पे questions होते हैं. ठीक है, they are very frequent in IPMAT, बहुत frequent होते हैं IPMAT. इंदौर ले लो आप, रोहतक ले लो, इनफैक्ट कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम उठा के ले लो, इट इज ऑलवेज अरिथमेटिक हैवी. ठीक है, अरिथमेटिक का वेटेज हर एग्जाम में आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा. तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, यू हैव टू वर्क ऑन अरिथमेटिक, देयर इज नो एस्केप, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि बिल्ड द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. दीज आर द टॉपिक्स की इनमें देयर इज नॉट अ डिफाइंड वे, है ना? कि कोई एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूला लगेगा तो सॉल्यूशन निकल जाएगा. यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टॉपिक का, एंड स्पीड थ्रू डेली ड्रिल्स. ठीक है, स्पीड बिल्डिंग इज दैट टाइम, इज दैट जो थोड़ा सा टाइम लेता है. तो यू हैव टू लाइक सिट ऑन अ डेली बेसिस, सिट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अरिथमेटिक एंड सॉल्व देम इन अ टाइम फ्रेम. तो डेली ड्रिल्स करना पड़ेगा. इट इज नॉट लाइक कि आपने एक दिन कर लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एंड इट इज डन. नो,
You have to do thoda, but on a daily basis, right? Then the second core concept is algebra, where you will be seeing like 50 to 20% of the questions आपके आने वाले हैं. अब यहाँ पे भी जो की टॉपिक्स है जिन पे आपको पहले फोकस करना है, दैट इज द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से तो फॉर श्योर होता ही होता है. ठीक है, देन इनइक्वालिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शंस, ग्राफ, सीरीज, एपीजीपी, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है कि कॉमन आईपी मैट ट्रैप्स में कि आपको थोड़ा सा लाइक हिडन आइडेंटिटीज, आपको आइडेंटिटीज पे थोड़ा सा कमांड बना लेना है. ऑल द आइडेंटिटीज यू शुड नो. ठीक है, वर्ड बेस्ड इक्वेशंस, इस टाइप के प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व, कि आपको डायरेक्टली इक्वेशंस ना दे करके इन द फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज देगा, तो आपको क्विकली इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि प्रैक्टिस सब्सटीट्यूशन एंड विजुअलाइजेशन. ठीक है, कि आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की, ग्राफिकल के थ्रू विजुअलाइज करना एंड सो ऑन. ये चीजें करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ बूस्ट इन एल्जेब्रा, राइट? तो मेजॉरिटी माय प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, लाइक अगर हम सिर्फ एरिथमेटिक और एल्जेब्रा को भी आप देखो तो 35 एंड लगभग 20%, तो मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस इज फ्रॉम एरिथमेटिक एल्जेब्रा एनी हाउ, राइट? Then next is the number system. So number system is a topic. The weightage is like 10 to 15% का weightage है. ठीक है, कम है weightage, but we cannot skip because the topics questions will be like divisibility, remainders, HCF, LCM, factors, digital sum, cyclicity. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं. तो this topic is not very very difficult. It can be mastered easily. ठीक है, if you know the properties, आप इसको ध्यान से करोगे तो it is easy to excel in this topic, right? So it is very important. तो यहाँ पे you have to focus on like remainder theorems are important, number की properties basically they are very important. So then comes the third part is the number system, जहाँ पर we should focus more. Then another one is geometry mensuration. Now this part can be a bit lengthy, right? क्योंकि यहाँ पे a lot of things are involved. Complete geometry is there, starting from the lines and angles, then moving to triangles, circles, quadrilaterals, coordinate geometry. Then you will have to do mensuration, where you will be doing surface area volume questions. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा formulas tips पे होने चाहिए, theorems, properties, everything. तो this can be थोड़ा बहुत challenging हो सकता है, right? But if this part, if you do it once, एक बार मेहनत अगर इस पे कर लिया, सारी properties, theorems पे अपन ने काम कर लिया, तो then you don't have to do it back and forth. It is one time investment, so it has a weightage of around 10 to 15%, right? तो टू पार्ट्स में आई कैन डिवाइड कि वन पार्ट इज अरिथमेटिक अलजेब्रा जो 50% से ज्यादा है, एंड बाकी जो नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड मॉडर्न मैथ्स, इट विल मेक दैट 20%, राइट? बट आई कैन नॉट स्किप दैट 20% ऑल्सो ना. तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करके इफ वी डू, it can be done. Now it is important because it appears in both IPMAT Indore, रोहतक frequently, मतलब होता ही होता है, एक आधा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखेगा. तो यहाँ पे टिप्स यही है, फॉर्मुलेज, मेक अ फॉर्मूला शीट, कीप रिवाइजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस एंड प्रैक्टिस थ्रू डायग्राम, बिकॉज ज्योमेट्री मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट डायग्राम. तो अगर आपको डायग्राम समझ आते हैं, ठीक है, यू नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स, तो इट वुड हेल्प यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इजिली. Next is modern maths. It has a very least weightage, right? So these include the topic like permutation, combinations, probability, set theory, statistics. It will be there. So there is not very high weightage, है ना? तो आप मान के चलो कि लगभग अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस जनरली आपको यहाँ से दिखेगा. तो आईपी मैट का ट्रेंड है, इसमें भी अगर अपन इंपॉर्टेंट की बात करें तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन इज प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हर साल होता ही होता है. तब अगर हम मॉडर्न मैथ्स में बात करें तो सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स का, वो स्टैटिस्टिक्स से तो हार्डली यू विल सी क्वेश्चंस, कम चांसेस होते हैं, बट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से फॉर श्योर यू विल फाइंड द क्वेश्चंस, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन को पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना पेपर आने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन में उतना टाइम दोगे, राइट? सपोजिंगली इफ आई डू नॉट नो मॉडर्न मैथ्स का वेटेज एंड आई कीप डूइंग प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, इस पे आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, but at the end of the day you are getting only 1 to 2 questions, so that would not be a wise investment, right? So my time division should be that major focus on arithmetic, then algebra,
and then these three topics you can practice combinedly, because these three topics, they will be including approximately 20% of the syllabus of the questions in the exam. Okay, now how to master these five areas. ठीक है, अब aptitude is it is not a one day process. ऐसा नहीं है कि you sit for like 2 days, or suppose you sit straight for 4 5 days and you will be able to master it. It is not like that. This, it needs a time frame, right? You have to make a like make a 4 week rotation plan. You have to make a plan, ठीक है, cover all the five twice. आप एक ऐसा प्लान सेट करो कि जिसमें आप सारे जो पांचों एरियाज हमने किए हैं, यू कैन डू दिस ट्वाइस, ठीक है। आप एक फॉर्मूला बुक बना लो, रिविजिट कोर फॉर्मूलाज वीकली, सारे फॉर्मूलेज, बीट ज्योमेट्री, बीट एल्जेब्रा, सबको आप वीकली एक बार गो थ्रू करना है, and practice PYQ. This will actually help you a lot. So if you practice the PYQs, you get an idea. Okay, this is the level of the question asked, right? This type of questions are asked. And सबसे important है, take sectional mocks. Sectional mocks are very very important, because sectional mocks will actually prepare you for the actual exam, right? You have to complete the whole section, right? Try to focus on the accuracy and a balance of speed and accuracy, right? Do not just go for unnecessary guessing. Just focus on your accuracy and speed, because both are required. There is a limitation of time. Like I have approximately even less than 2 minutes to spare on every question. So if I will lack in speed, so definitely I will be able to solve questions, but not enough to cross the sectional cutoff, right? At last, a suggestion would be that don't study more topics, study the right one topic. ठीक है, कि आपको ज्यादा टॉपिक पढ़ने से यू वॉन्ट बी गेटिंग बेनिफिट. इंस्टेड अगर आप राइट टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे, दैट विल गिव यू बेटर आउटपुट, राइट? सो फोकस plus practice, then 70% of the quant is conquered, right? And believe me, 70% of it is very easy. If you go systematically, you can easily conquer this 70%. So I hope you get the idea कि which five core concepts or which five core areas are there, कि जहाँ पे you have to focus, ठीक है, where you have to focus to cover that 70% of the IPMAT questions. So thanks for watching the session. Do like and subscribe the session and share it as well. See you in the next one with some more information.